Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about misplaced modifiers. This is very much common observation that in our writing, modifiers are not placed on their right or logical place. And if it happens so, what is the effect of it? It causes confusion in meaning and sentence structure doesn't remain elegant. So, in order to lend elegance to our writing and meaning, we know we need to know what are modifiers and what are their logical places and how many cases of modifiers are there. In the first place, we try to learn how a modifier works. Modifier is a word that modifies a noun or a word. Here are a few examples. A cement wall. So cement is a modifier for the wall. It singles out a wall. There might be mud walls, there might be brick walls, but we are talking about a cement wall. So it becomes a unique by using cement. Similar is the case with a silver box. Silver modifies a box and a large tree. Large modifies a tree. There might be many other trees, but there is one that is a large tree. By saying a large tree, we single it out. So we can point out a certain things by using a modifier for that. Another case is of a monkey without a tail. Here again, monkey that doesn't have a tail. There might be other monkeys that have a tail, but this one doesn't have. So a monkey without tail modifies a monkey. Here are a few examples of misplaced modifiers in order to understand how they cause confusion and how clarity can be lent to our writing by addressing the modifier cases. So here is one. On her way home, Jan found a gold man's watch. So we see that man cannot be gold. This gold word has been placed closer to man. So man cannot be a gold. So what can be gold is a watch. How we can correct it? By placing gold closer to watch, we have corrected this mistake. So such errors can be corrected by placing an adverb which is at a wrong place to a right place. If you take it to a right place, your confusion is addressed. Your mistake is addressed. Here is another example. The dealer sold the Cadillac to the buyer with leather seats. Here in this case, we see that with leather seats is a phrase that is closer to buyer. So buyer cannot be with leather seats. A car, a Cadillac, anything like that might be with leather seats, but not buyer. So let us place with leather seat closer to its word or noun that is being modified. Here is the example. The dealer sold the Cadillac with leather seats to the buyer. So in this revised structure, we see that it becomes more elegant and clearer in meaning. So confusion is also addressed. Here are a few cases of various modifiers. So we study them one by one. There are 4 cases of modifiers. First one is misplaced modifiers. Second one is misplaced phrases and clauses, then is of squinting modifiers, then is of split infinitives. What is a misplaced adverb? If an adverb in a sentence is misplaced, it conveys wrong meaning or it conveys the other than the intended meaning. जो हम चाह रहे हैं उसके अलावा कोई meaning convey कर देता है. So that is misplacement of adverb. Again, there is misplacement of phrases and clauses. अगर एक phrase या clause को उसकी appropriate place की बजाय हम उसके wrong place पे sentence structure में place करते हैं तो उससे भी confusion in meaning आती है. तो then squinting modifiers का बड़ा special case है. They modify a word that is before them and after them, so they cause confusion in the meaning. Then split infinitive. Infinitive, you all know that to or and base form of verb are called
infinitives, and if something is placed between two and its base form of verb, that is called mistake of split infinitive. Let us study all these four cases one by one. Misplaced adverbs. Here is an example of misplaced adverb. As I talked earlier, that if an adverb is misplaced, it means it is not on its logical place, then it causes confusion to the meaning. This will only take 5 minutes. You see, only is at a wrong place. Apparently, it doesn't seem to be on a wrong place, but it is here on wrong place because verb cannot take, this verb take does not need only with it. So only should be placed on its, because only is referring to degree or quantity, something like that. So it should be with the amount 5 minutes. We have placed only with 5 minutes. 5 minutes is an amount. So only can be placed here closer to 5 minutes. Then I nearly have been here for the last 10 days. One can be somewhere or not. Nearly जो है वो shows करता है कि if someone is not there exactly. So आप कहीं पे हैं या नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता you are nearly somewhere or you are not nearly somewhere. तो इसको भी अपने appropriate place पे आना चाहिए. देखते हैं what is its appropriate place. अगर हम कहते हैं I have been here nearly for the last 10 days, so nearly closer to the for last 10 days conveys clearer meaning. अब हमें पता चल गया it might be he been there for 9 days, maybe he was for there 11 days. So nearly 10 days, by saying one gets a qualifier or modifier for the amount. तो नियरली का हैव बीन के क्लोजर होना कंफ्यूजन काज करता है, डजंट कन्वे द मीनिंग. इसकी ये प्लेसमेंट ही सही नहीं है, इट इज रॉन्ग प्लेस. तो इसको इसके लॉजिकल नाउन या वर्ड के या फ्रेज के करीब कर दें तो करेक्ट हो गया मीनिंग. देन मिसप्लेस फ्रेजेस एंड क्लासेस, कि आप फ्रेज एंड क्लास को उसकी रॉन्ग प्लेस पे रख दें तो भी मिस्टेक होती है. जैसे ही लॉस्ट द चांस टू मेक लार्ज प्रॉफिट्स थ्रू द वर्क ऑफ इमिटेटर्स. And through the work of imitators, अब हमें नहीं मालूम whether it modifies large profits, to make a chance, किस चीज़ को करता है. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज हमारा बन जाता है. We place such phrases in the beginning. Through the work of imitators, comma, he lost the chance to make large profits. सो आपने इसको रीअरेंज कर दिया, इसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी, तो आपका सेंटेंस एलिगेंट बन गया, अच्छा सेंटेंस बन गया और मीनिंग भी वाज़ेह हो गया. Another example here, he searched around and found an old bus schedule in the drawer that was out of date. Students, आप अंदाज़ा लगा लें कि drawer, it is closer to the drawer that was out of date. आप भी देखें, drawer cannot be out of date. Schedule can be out of date. And word schedule is given here in the sentence. तो हम क्या करते हैं, that was out of date, इसको हम schedule के करीब कर देते हैं, क्योंकि in the drawer जो है वो out of date नहीं, वो place है. तो इसका solution ये है, he searched around and found in a drawer an old bus schedule that was out of date. अब that was out of date is closer to the schedule, that conveys बेटर मीनिंग एंड क्लियरर मीनिंग्स. इस तरह से हम अपनी राइटिंग में देखें कि छोटी चेंजेस हैं, आप प्लेसमेंट की चेंजेस हैं सिर्फ, वी हैवंट मेड बिग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स. बस ये है कि लॉजिकल प्लेस पे आप फ्रेज को, क्लास को, मॉडिफायर को, एडवर्ब को प्लेस कर दें तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है. देन इज ऑफ स्क्विंटिंग मॉडिफायर. थर्ड केस, जैसे मैंने पहले कहा था कि स्क्विंटिंग मॉडिफायर क्या करते हैं, अपने से पहले और अपने से बाद के दोनों वर्ड्स या नाउन्स को मॉडिफाई करता है, और इस तरह से आपका जो इंटेंडेड मीनिंग होता है उसकी बजाय रीडर पे डिपेंड करता है कि वो अपना मीनिंग ले ले. तो आप जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो मीनिंग कन्वे नहीं होता, अनदर मीनिंग इज कन्वेड. हियर इज एन एग्जांपल. रीडिंग अ बुक फ्रीक्वेंटली विल चेंज द होल कोर्स ऑफ ए मैन्स लाइफ. Apparently ये सेंटेंस करेक्ट लगता है, there seems no mistake, but there is a mistake. वो क्या है कि अगर हम इसको यूं पढ़ते हैं, रीडिंग अ बुक
frequently will change the course of whole course of a man's life। इसका मतलब अगर बुक को रीड फ्रीक्वेंटली रीड किया जाए, अगर मैं इसको पढ़ूं रीडिंग अ बुक फ्रीक्वेंटली विल चेंज, तो इसका मतलब यह है कि जब बुक पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंट चेंज आएगा। सो इट इज अप टू मी वट एवर द मीनिंग आई वॉन्ट टू टेक फ्रॉम दिस इफ आई एम अ रीडर। तो राइटर का मीनिंग कुछ और हो सकता है राइटर का मीनिंग है कि बुक को अगर फ्रीक्वेंटली रीड किया जाए देन चेंज आता है। अब राइटर का मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर बुक को पढ़ें तो देर इज अ फ्रीक्वेंट चेंज इन वन कोर्स ऑफ लाइफ। तो ये इंटेंडेड मीनिंग डिफरेंट है और जो परसीव्ड मीनिंग है दैट वुड बी डिफरेंट। तो इसको एड्रेस करने का तरीका क्या है कि आप इस मॉडिफायर को इसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे ले जाएं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, रीडिंग अ बुक विल फ्रीक्वेंटली चेंज, हमने फ्रीक्वेंटली को यहां से उठाया और चेंज के साथ लगा दिया जो कि वर्ब है। इस तरह से फ्रीक्वेंटली हैज बिकम एक्सक्लूसिव फॉर चेंज, ये अब बुक को या रीडिंग को क्वालिफाई नहीं कर रहा, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो हमारी कंफ्यूजन एड्रेस हो गई। आप ये भी कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंटली को यहाँ से उठाएं, आप शुरू में ले जाएं, फ्रीक्वेंटली रीडिंग अ बुक विल चेंज द होल कोर्स ऑफ ए मैन्स लाइफ, ये हो सकता है। दैट अगेन वुड बी फिक्स्ड मीनिंग। तो अगर आप जो भी मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, मेक अरेंजमेंट इन द सेंटेंस according to that if it is a case of squinting modifier। Then last but not least modifier case, that is our split infinitive। जैसे मैंने कहा था कि इन्फिनेटिव्स क्या हैं कि टू और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इनको अगर आप स्प्लिट कर दें, इनको अगर ब्रेक कर दें, इनके दरमियान कुछ प्लेस कर दें, तो ऐसा केस जो है स्प्लिट इन्फिनेटिव का केस बन जाता है। दैट इज आल्सो अ मिस्टेक। हियर इज एन एग्जाम्पल, इट वॉज माई हैबिट टू डेली वेकअप। ये भी अक्सर है, हम इस तरह की एरर करते रहते हैं, तो बज़ाहिर लगता है कि दिस इज नॉट अ मिस्टेक। सीएसएस के पेपर में भी इस तरह से आ जाता है, हमारे वन पेपर जो एफपीएससी का था उसमें भी आ जाता है। तो दिस इज वेरी मच कॉमन। हाँ, और हम ये मिस्टेक करते भी हैं, अगर हम अलर्ट हो जाते हैं तो हमारी ये एरर भी रिमूव हो सकती है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। हमने क्या किया कि डेली को यहां से उठाया, अर्ली के बाद प्लेस कर दिया। इट वॉज माई हैबिट टू वेक अप अर्ली डेली ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ। अब आप देखें कि ये लॉजिकल है, तरतीब भी देख लें। अर्ली उठना ये टाइम के लिहाज से, डेली ये रोजाना की, अर्ली जो है पार्ट ऑफ द डे है, यानी अर्ली मॉर्निंग वट एवर जो भी आप कह लें, डेली डे है। और ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ ये लार्जर कंटेक्स्ट, स्मॉलर टू लार्जर कंटेक्स्ट की तरफ हम मूव भी कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल वे है कि आप उसके आपका जो मॉडिफायर है उसे आप उसकी राइट प्लेस पे लेकर जाएं। तो इसकी राइट प्लेस क्या है कि आप इसे अर्ली के बाद और ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ के दरमियान में प्लेस कर दें, और टू वेकअप की एरर भी इस तरह से आपकी खत्म हो गई। So dear students, these were the four cases of misplaced modifiers। आप इनको मास्टर कर लें, मेमोराइज कर लें, आपकी एरर्स बहुत हद तक रिमूव हो जाएंगी, आपकी राइटिंग बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर एलिगेंट हो जाएगा, और आपका मीनिंग जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो इफेक्टिव मीनिंग हो जाएगा, आपकी राइटिंग इफेक्टिव एंड स्ट्राइकिंग हो जाएगी। कीप फॉलोइंग माय लेक्चर्स, कीप फॉलोइंग माय चैनल। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी